Welcome to Lexi Daily, your daily English boost. Easy words, clear speaking. Nutty means silly, a little crazy in a funny way, someone playful or goofy. Nutty मतलब थोड़ा पागल सा, लेकिन मजाकिया और शरारती. Spiffy means stylish, neat and well dressed. Used when someone looks clean, fashionable and impressive. For example, he looks really spiffy in that suit. Spiffy मतलब stylish, साफ सुथरा और smart दिखने वाला. Iffy means uncertain, doubtful और not reliable. जब किसी चीज के बारे में पक्का भरोसा न हो. Example, I'm feeling iffy about this plan. मुझे इस योजना को लेकर शक हो रहा है. आसान शब्दों में, जब चीज ठीक भी हो सकती है और नहीं भी, तब iffy बोलते हैं. Carpe diem means seize the day. Make the most of the present time. आज का पूरा लाभ उठाओ, वर्तमान क्षण को जियो. Example, Carpe diem don't wait for tomorrow. आज को जियो, कल का इंतजार मत करो. Snack slang. An attractive, good-looking, cute person, someone you find appealing. आकर्षक व्यक्ति, अच्छा दिखने वाला cute, जो बहुत पसंद आए. Example, she's a snack. वह बहुत cute आकर्षक है. Baddie. A confident, stylish, attractive person. Someone with bold attitude and strong vibe. Trendy, fashionable, self-assured. Confident और stylish लड़की, लड़का. खुद पर भरोसा रखने वाला. दमदार एटीट्यूड वाला. नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव स्लैंग है. Example, she's a total baddie on Instagram. Chuggy means outdated, trying too hard to be trendy. Not cool anymore. Old style trends. Example, वो कैप्शन थोड़ा सा चुगी लग रहा है. Retrospect means looking back at past events, thinking about something after it has happened. Example, in retrospect, I should have studied more. अब पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी. Peacocking it means showing off in a flashy or attention-grabbing way, dressing or behaving to attract attention. Example, he's peacocking with his new car at the party. वह पार्टी में अपनी नई कार के साथ पूरा peacocking कर रहा है. Alien means something unfamiliar or strange, a foreigner, formal, legal use. Hindi, meaning अजनबी, अजीब सा, अनजान. विदेशी, कानूनी, औपचारिक संदर्भ में. Example, the culture felt alien to him at first. शुरुआत में वह संस्कृति उसे अजनबी लगी. He felt like an alien in a new city. नए शहर में उसे खुद को अजनबी सा महसूस हुआ. Skibidi means a nonsense, fun slang word, used for silly, chaotic, goofy energy. Popular from Skibidi toilet meme and viral songs. Example, this video is pure Skibidi energy, meaning easy. Skibidi and no logic, only vibes. Bussin means extremely good, delicious, mostly for food. Amazing, top tier. Example, this pizza is bussin. ये खाना एकदम bussin है. Free game. Helpful or important advice given without charging money. कीमती सलाह मुफ्त में, बिना पैसे के दी गई अहम सलाह. Example, he gave me valuable advice for free. उसने मुझे मुफ्त में कीमती सलाह दी. Slang, casual tone में लोग कभी-कभी इसे ऐसे भी कहते हैं, free advice. Standing on business. It means sticking to what you said or promised, taking responsibility and staying serious about your work, values or decisions. Example, he said he'd finish the project and he's standing on business. उसने कहा था कि प्रोजेक्ट पूरा करेगा और वह अपनी बात पर डटा हुआ है. Gen Z slang. Context means no excuses, full commitment, real action. Crash out it means to suddenly lose control, get extremely angry or mentally break down due to stress or pressure. Example, he crashed out after the argument. बहस के बाद वह कंट्रोल खो बैठा. ज्यादातर एंगर, ब्रेकडाउन वाले मीनिंग में यूज होता है. Locked in means fully focused, committed or determined. Example, he is locked in. Hindi meaning, वो पूरी तरह फोकस में है. Elated it means extremely happy, very joyful, overjoyed, अत्यंत प्रसन्न, बहुत खुश, खुशी से फूला हुआ. Example, she was elated after hearing the good news.
अच्छी खबर सुनकर वह बहुत खुश हो गई। Spontaneous. It means happening naturally without planning, done instantly. स्वतःस्फूर्त बिना सोचे समझे अपने आप होने वाला एग्जाम्पल। It was a spontaneous decision. यह एक स्वतःस्फूर्त फैसला था। Off the cuff means spoken or done without preparation. It describes something said suddenly or impromptu. Example, he gave an off-the-cuff speech. उसने बिना तैयारी के भाषण दिया। Ick means a sudden feeling of dislike or cringe. It is when attraction suddenly disappears. Example, the way he behaved gave me the ick अचानक ना पसंद आना जब किसी की हरकत देखकर cringe feel हो। Example, उसका behavior देखकर मुझे ick feel हुआ। Ethereal means something very light, delicate, and beautiful. It feels almost heavenly, like it does not belong to the real world. Example, her voice had an ethereal quality. Ethereal का मतलब होता है बहुत ही कोमल और सुंदर, जो चीज सपने जैसी या आसमानी लगे। Example, उसकी आवाज में एक दिव्या मिठास थी। Gel with means to match well or work smoothly with someone or something. Example, this color gels with your outfit. He gels well with his team. Gel with का मतलब होता है अच्छी तरह से मेल खाना या तालमेल बनाना। Example, यह रंग तुम्हारे कपड़ों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। वह अपनी टीम के साथ अच्छा तालमेल बना लेता है। Gratifying means something that gives pleasure or satisfaction. It feels rewarding and fulfilling. Example, helping others is a gratifying experience. Gratifying का मतलब होता है संतोष और खुशी देने वाला, जो काम करके दिल को सुकून मिले। Example, दूसरों की मदद करना एक संतोष देने वाला अनुभव है। Punk it means a rebellious person, especially a young one who rejects traditional rules and follows a bold, non-conformist style. Someone rude, aggressive, or disrespectful. Informal and slang use. Examples, he dresses like a punk and listens to punk rock. उदाहरण, वह punk style के कपड़े पहनता है और punk music सुनता है। Thank you so much for watching. We truly appreciate you watching our video till the very end. We hope you enjoyed the content and found it helpful. We'll be back soon with another exciting video. If you liked the video, don't forget to like, share, and subscribe.